Hi everyone, Namaste. So this is like actual get ready with me video for Karwachauth. जब मैं actually करवाचौथ के लिए ready हो रही थी, I shooted this video. So I asked you whether you wanna see a video. So most of you guys replied yes. So let's get started. So I'm starting with vitamin C and E serum by Skin Deva और इसे अच्छे से अपने चेहरे पे लगा के मैं इसे blend कर रही हूँ. You really need to prepare your skin with lots of hydration because करवा चौथ है सुबह से कुछ पिया नहीं है so dehydration हो जाती है. That's why I applied some serum on my skin and then also I'm gonna hydrate my lips as well with lip balm by Matra और अच्छे से अपनी लिप्स पे लगा लूँगी. एंड देन आई डिड माई हेयर. आई एक्चुअली क्रिम्प्ड माई हेयर जो कि मैंने शूट नहीं किया. Now let's come to the makeup again and I am using hydrating primer by NEU. Again hydrating primer ले रही हूँ because skin dehydrate हो जाती है when you don't drink lots of water, so that's why. Now for eyes I'm gonna take a paint pot in soft ochre by MAC और इसे अच्छे से अपने eyelids पे लगा रही हूँ ताकि जितनी भी मेरी eyelids की pigmentation है वो ख़त्म हो जाए and I can work with eyeshadows. Now to fix everything, to set everything, I'm using Studio Fix powder in NC35 और अब मैं ले रही हूँ अपनी Jaclyn Hill palette and I'm using this rust shade और एक छोटे blending brush की मदद से इसे अपने outer corners पे लगाऊंगी और इसे धीरे धीरे मैं अपनी crease पे भी लेके जा रही हूँ just like this, just to have that really nice soft blended look. Then I'm gonna take Blend the Rules eyeshadow quad in the shade Paparazi. It's by Sugar और इसमें से मैं ये copperish color लेके अपने fingers की मदद से अपने outer half lid पे लगा रही हूँ and then I'm taking this really pretty gold color और इसे मैं अपने inner half पे लगा रही हूँ. अपने inner corners में अभी भी खाली छोड़ रही हूँ and I'm just gonna blend both the eyeshadows really nicely ताकि एक soft gradient सी look आए. Then I'm gonna take this champagne color from the same palette और इसे मैं smudger की मदद से अपने inner corners पे लगा रही हूँ and then I'm just gonna take a fluffy blending brush and I'm just gonna blend all the eyeshadows together. Then I'm taking the brown shade again and by using a pencil brush मैं अपना outer recreate कर रही हूँ, थोड़ा सा deepen कर रही हूँ, dark कर रही हूँ ताकि एक smoky look भी आए just like this. Then again I'm gonna take a blending brush and I'm just gonna blend all the eyeshadows together to complete this look and then I'm gonna take the same inner corner shade and I'm just gonna apply to my brow bone area and again I'll blend it. इसके बाद मैंने यूज़ किया eyeliner I Won't Use So in Black Swan again by Sugar और इससे मैंने क्रिएट किया एक winged eyeliner. मैंने अपने inner corners भी winged इन किए. Now let's come to the face and पहले मैं अपना जो dark circles है उसे color correct करूँगी by Fit Me Concealer 30 Cafe से and अपनी sides of mouth जो भी spots हैं उन्हें भी color correct करूँगी and with the help of blending brush I'm just gonna blend everything really nicely. And then I'm gonna use the foundation. This is Luxe foundation in the shade Brulee and it's by Glow Minerals. I love this foundation. ये foundation में जब भी लगाती हूँ एक healthy look ये मुझे देती है. That's why I love using it for special occasions. और इसे एक foundation brush की मदद से मैं अच्छे से blend कर रही हूँ and ये एक dewy finish भी देती है. That's really good for hydrating your skin as well. And I'm gonna blend it really nicely. Now I'm taking Instant Age Eraser Dark Circle and I'm just gonna apply under my eye area and my bridge of nose, cupid's bow, chin, forehead just to highlight my face and then I'm just gonna blend it with PAC 003 brush really nicely. Now to set everything I'm using Studio Fix powder NC35 में फिर से and I'm just gonna apply जहाँ जहाँ भी मैंने highlight किया है with the help of a powder brush and I'm just gonna let it sit there for a few minutes. और meanwhile मैंने अपनी eyebrows कर ली एक dark brown eyeshadow use करके and I wanted to make them fuller and now I'm just gonna do my lower lash line. मैं rust color लेके अपने जो lower lash है वहाँ पे smudge कर रही हूँ and then inner lower lash पे मैं gold color smudge कर रही हूँ. Then I'm taking graphic liner in black by MAC again and I'm just applying to my waterline just as a kajal और फिर मैं इन दोनों को like eyeshadow और काजल को smudge कर रही हूँ ताकि एक बहुत ही अच्छी सी smoky look आए and then with the blending brush I'm just gonna blend it more and then I'm applying
लैशेज़ बाय पैक नंबर 55 ब्यूटीफुल नेचुरल लैशेज़। और उसके बाद एक पाउडर ब्रश की मदद से हम जस्ट ब्लेंडिंग एवरीथिंग टुगेदर, जितना भी एक्सेस पाउडर है वो भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देन फॉर ब्लश आई एम यूजिंग Prism by MAC, and I am using it as a contour, not as a blush. So I'm just applying it at hollows of my cheeks और अपनी jaws भी contour कर रही हूँ इसके साथ. And for blush I'm using I Will Always Love You. It's by Too Faced और मैं इसे अपनी cheeks पे लगा रही हूँ. And I'm also blending with the contour जो कि हमने blush के साथ किया था. And then I'm using this highlighter by the Balm Luuminiser. It's a beautiful highlighter. I'm just applying onto the highest points of my cheeks. और फिर जो ब्लेंडिंग ब्रश था जो कि मैंने अपने आइज़ के लिए यूज़ किया था उसकी मदद से मैं अपना नोज़ कंटूर कर रही हूँ विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा कलर और एनी एक्स्ट्रा आई शेडो. एंड देन आई एम जस्ट गोना हाईलाइट माई ब्रिज ऑफ नोज़ एज वेल यूजिंग माई फिंगर्स and also Cupid's bow. Now let's come to the lips. So I wanted to go with like a very contrasting lip color, so I'm using this shade called Brandy. It's by Mellin. Beautiful color and beautiful texture this lipstick has, and I'm just gonna apply it on my lips. And look how bright and bold this color looks. I love this lipstick a lot. And then to set everything, I'm using Europe Girl Cosmetics setting spray. And this look is not complete with a bindi. I supported a very big bindi for this Karwachauth, and obviously sindoor and some really nice maroon bangles, which is also contrasting according to my outfit. And this is the whole look, and this is how I got ready for Karwachauth with all the jewelry and gajra. And yeah, I hope आपको पसंद आया होगा. उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा गेट रेडी विद मी वीडियो ये अच्छा लगा होगा. और अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए. बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी.